अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर हैदराबाद पुराना शहर याकुतपुरा बड़े बाज़ार के पास जफ़र रोड के पास डॉक्टर फरहाना पॉली क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर एंड मेटर्निटी सेंटर। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी ये दुख्तर है ज़फ़र पहलवान के। जैसा कि हैदराबाद की जानी मानी मारूफ हस्ती ज़फ़र पहलवान और उनकी दुख्तर डॉक्टर फरहाना अल जाबरी, जिन्होंने गरीबों की खिदमत करने का काम किया, आज उनका फ्री हेल्थ कैंप था जिसमें डायबिटिक्स और थायराइड का फ्री ट्रीटमेंट किया है, इसका चेकअप किया है। और डायबिटिक के स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस.ए. माजिद, जो हैदराबाद का एक जाना माना नाम है, इन्होंने भी आज डॉक्टर फरहाना अल जाबरी को टाइम दिया और उनके पॉलीक्लिनिक में आकर पेशेंट्स को चेकअप किया। और वहीं चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद बिन याया, इन्होंने आकर बच्चों का चेकअप किया। आइए, बड़ी अच्छी खबर, बड़ी बेहतरीन खबर, और हम आपको डॉक्टर फरहाना अल जाबरी पॉलीक्लिनिक का एक सेल नंबर भी देते हैं ताकि फ्री मेडिकल चेकअप कब है आप ये जानकारी ले सकते हैं इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर। फ़ोन नंबर है 6302213461। ये क्लिनिक का नंबर है। जिस किसी को भी कुछ मज़ीद तहकीकात करना है, इस पॉलीक्लिनिक में मालूमात करना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर मालूमात हासिल कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं ये खबर। जनाब ज़फ़र पहलवान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। यूँ तो हैदराबाद का हर शहरी आपके नाम से वाकिफ़ है और आपको जानता पहचानता है। आप एक अखाड़े की दुनिया के जाने माने पहलवान, लेकिन बावजूद इसके आपने अपनी दुख्तर को इस काबिल बनाया कि आज वो लोगों की खिदमत कर रही हैं, एक काबिल डॉक्टर बनी है। क्या हर वालिद को इस तरह अपनी औलाद को बनाना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो? वालिदैन का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। तो आप अपनी दुख्तर के ताल्लुक से कुछ फरमाइए अवामुन नास को, जो आपके दुख्तर के पास आके फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। मेरी बेटी को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था जी। बचपन में मैं डॉक्टर बनूंगी मैं जहन बना लेता इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला चाहे तो डॉक्टरी करेंगे। तो मैं मस्जिद से वाबस्ता हूँ, MIM से जी। तो सलाउद्दीन साहब का अच्छा सिपाही लोग बनते थे, उन्हीं की मेहरबानी से मेरी बेटी को बगैर किसी डोनेशन के टिकट दिए साला साहब, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तब उसके बाद जो भी कोशिश थी वो करते रहा। तो जिनको MD का शौक था जी भी शायदान से अल्हम्दुलिल्लाह MD करें। एक बेटे में LLM है जी, माशाअल्लाह, 2 बेटे मेरे एडवोकेट है जी माशाअल्लाह। और मैं इंटर तक तालीम पाया। इसी इलाके का 2 टाइम काउंसलर भी रहा मैं MIM से। जी साला की मेहरबानी टिकट दे दें, उस काबिल समझे। और पॉलिटिकल में नादान था, साला सभी बताए थे ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, उस पर चलते रहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 बेटे में लायक एक 38 में, एक 4 ईयर मेरे बेटे। माशाअल्लाह, आपकी बेटी इतनी काबिल डॉक्टर बनी है, इसके बाद आपको किस तरह महसूस होता है साहब? क्या फ़ख्र से आपका सीना फूल जाता है या कुछ कहना चाहेंगे? सब अल्लाह की मेहरबानी है। बाद में साला की मेहरबानी टिकट दिए, मेरी बेटी को सीट दिए बगैर किसी डोनेशन के। हमेशा उनके दुआ करते रहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया साहब। डॉक्टर माजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ में आपका खैर मकदम है साहब। आप जैसा कि हैदराबाद के नामी डॉक्टरों में से आते हैं जी जो कई पेशेंट्स को आपके पास से शिफा मिली है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ टिप्स आप पेशेंट्स को देना चाहेंगे कि डायबिटीज से किस तरह बचा जाए? और थायराइड कि हर किसी को थायराइड भी आ रहा है, जैसा कि पहले कॉमन सी बात थी, शुगर आता था, जी थायराइड भी एक कॉमन सी चीज़ हो गई है। जी तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप पेशेंट्स को कुछ टिप देना चाहेंगे सर? जी ये थायराइड
ایکچولی صحیح معنوں میں تو یہ پہلے فیملی ہسٹری کے طور پہ آتی تھی. خاندان میں کسی کو اگر تھائرائڈ ہو تب جو ہے ان کے اولادوں میں بچوں یا بچیوں میں جو ہے تھائرائڈ آیا کرتا تھا اور شوگر آتی تھی. مگر اب آج کل جو لائف اسٹائل جو چینج ہو گیا ہے اور سیڈنٹری لائف اسٹائل بولتے ہیں اس کو, مطلب یہ کہ جو ہے زیادہ ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں, لوگ جو ہے آرام طلب ہو گئے ہیں اور گھر کے نکلتے ہی جو ہے ان لوگوں کے لیے یا 2 ویلر یا 4 ویلر کا استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے اور غذا کا اسٹائل اور اوقات غذا بھی تبدیل ہو چکی ہے. اور غذا کے اسٹائل میں بھی جو ہے سمجھا ڈیلی جو ہے فیٹی فوڈس, اسپائسی فوڈس اور دوسرے جو ہے سمجھا آپ زیادہ کانسنٹریٹڈ فوڈس استعمال میں آ رہے ہیں اور اس کے اوقات بھی تبدیل ہو گئے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ جو ہے ان ٹائم اور لمیٹیڈ غذائیں اور فائبرس فوڈ زیادہ استعمال کرتے تھے. اب اسپائسی فوڈ اور فیٹی فوڈس کی وجہ سے اور سیڈنٹری لائف اسٹائل کی وجہ سے لوگوں کو جن کے خاندان میں شوگر نہ بھی ہو تو ان کو بھی شوگر آ جائے گی. پرسنل اور ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ ظفر پہلوان جو حیدرآباد کا ایک جانا مانا نام ہے, جی. جو ہر حیدرآبادی ان کو جانتا اور پہچانتا ہے, ان کی دختر بہت سی ڈاکٹر فرحانہ الجابری, انہوں نے یہاں پہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے ایوری منتھ 1 ڈے جی فری ہیلتھ کیمپ لگائے ہیں. تو ان کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کتنے لوگوں کو یہاں پہ سہولتیں پہنچ رہی ہے اور کتنے لوگوں کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے, اور ان کی سروس کے بارے میں اور ان کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں؟ ڈاکٹر فرحانہ الجابری کی تعریف کے لیے کوئی اردو میں الفاظ نہیں ہے. الحمدللہ وہ بہت ایک پرفیکٹ گائنوکالوجسٹ ہیں اور سینئر پرفیکٹ گائنوکالوجسٹ ہیں وہ, اور ان کے خدمات جو ہے بے انتہا ہیں اور وہ اپنے ایریا میں کافی پاپولر ہیں. نہ صرف یہاں بلکہ وہ شادہ میں بھی اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, جو وہاں پہ بہت اپنی شہرت رکھتے ہیں. فرحانہ الجابری محترمہ جو یہاں پہ عوام کی خدمت کے لیے یہاں پہ جو مسلسل ہر تھوڑے وقفے کے بعد جو کیمپ فری کیمپ ضرورت مند مریضوں کے لیے جو منعقد کرتے ہیں وہ کافی قابل تعریف ہے. میں ان کی بے انتہا تعریف کرتا ہوں اور میں ان کو عملاً جو ہے سمجھا پریکٹیکلی جو ہے سمجھا سرجری وغیرہ سے واقف ہوں. وہ بہت پرفیکٹ سرجن ہیں. یہاں وہ میرے پاس شفا ہاسپٹل میں بھی وہ تشریف لاتی ہیں. وہ شفا ہاسپٹل کی خوش نصیبی ہیں کہ وہ اپنے ہمارے لیے ٹائم نکالتی ہیں. وہ یہاں پہ بھی اپنا جو ہے پولی کلینک کے طور پہ جو چلا رہی ہیں یہ عوام کی خدمت کے لیے. میں سارے عوام سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ فرحانہ الجابری کے خدمات سے استفادہ فرمائیے. وہ فری بھی کیمپس رکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمیشہ جو ہے ان کے خدمات جو ہے قابل تعریف اور بہت ہی پرفیکٹ ہے. ان کا ہاتھ خواتین کے لیے سمجھا بہترین ہے اور وہ ان کے جو ہے سمجھا سرجری وغیرہ کافی جو ہے سمجھا پرفیکٹ ہے. So keeping this view in mind and keeping in mind to provide service to the Yakutpura people, Dr. Farhana has started a polyclinic in this area, and it's a polyclinic and a maternity center. She herself is a gynecologist, practicing gynecologist, and assistant professor in the Shadan Institute of Medical Sciences, and she's providing her services here in the evening hours. In this polyclinic, she's attached to a pediatrician, to a pediatric surgeon, to a general surgeon, and to other specialities. So the people of this area can come and take their services, utilize the services. The charges are very nominal, they are very subsidized, which are comparable to any subsidized centers. So they have an excellent opportunity to come here and take the services, render the services, and it will be very beneficial to all the people here. Thank you. As per your knowledge, as per your experience, what tips do you want to give to people for safety and protect themselves? See, what I would like to advise the people of Yakutpura or in general any patient population is that whenever they are experiencing any problem, whether it is an antenatally diagnosed problem for their child or if it is a postnatally diagnosed condition that they have, they should not waste their time in showing or taking time or heeding to the advice of unprofessional people. They should contact the professional who is a master in that specialty, and they should take the necessary medical help immediately for the child, so as to treat the child or so as to
help the child in the time prescribed. Suppose you should not allow the disease to progress, you should not allow the disease to advance, and then you should go for a medical help, thinking that the baby is small now, or any medical intervention or surgical intervention is not appropriate for child at that moment of time. So the consultant or the specialist in that specialty will be the best person to decide when to intervene for the child, when not to intervene, and what is the best possible remedy for that child for that necessary condition. So they should come to a specialist for whatever specialty that belongs to, and then take the necessary medical advice that is given by that professional at that moment of time, and not waste their time going to non-professional people, or waste their time thinking of themselves deciding what is best for the child. So they should take the advice and treat the child accordingly. So actually, sir, this is a personal question. Yes. Parents, how to know about the disease? Child means they are not able to tell about the problems of the disease. Yes. So how they will identify the disease, sir? See, in India itself today, as in developed countries, even in a developing country like India, as of today, the antenatal scan system in a city like Hyderabad is very robust and strong. All the patients are undergoing screening ultrasound scan at least twice or thrice in the whole period of gestation. They are getting TIFA scans done. In this TIFA scans and the other ultrasound scans which they are getting done in the antenatal period, most of the disease can be get diagnosed. And the gynecologist, for example, like Dr. Farhana or any other gynecologist, will tell them about the condition that scan is showing in an antenatal checkup. After the delivery of the child or the birth of the child, their postnatal scans also can be done, or their consultant pediatrician who is dealing with their child during the time of delivery or post-delivery will definitely tell them about the condition of the child and will refer them to a pediatric surgeon if the need arises. So if that is the matter, then they should not waste their time, come to a pediatric surgeon and take the necessary advice, and what the pediatric surgeon advises for them, they should comply with those instructions. मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। मुबारक रिश्ते ने हजारों रिश्तों को अंजाम दिया है। डॉक्टर, इंजीनियर, NRI और म्यारी रिश्तों के लिए राब्ता करिए। मुबारक रिश्ते, टोली चौकी, गहना ब्राइडल स्टोर के ऊपर। फोन 8121 100 900।